welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 24 of grammar, and the name of the chapter is direct and indirect speech. So let's talk about this. The words spoken by a person can be reported to another person in two ways. कि अगर किसी पर्सन ने कोई बात बोली है तो वो आप आगे कन्वे कर सकते हो दो तरीकों से, राइट? Showing speakers exact words with quotation marks is called direct speech. जब आप exact words आगे कॉपी पेस्ट करो उस स्पीकर के, राइट, तब वो कहलाते हैं डायरेक्ट स्पीच। और आपको उन एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन मार्क्स के अंदर कोट करना होता है। दैट इज नोन एज द डायरेक्ट स्पीच। वी कैन यूज सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स, कि हम सिंगल या डबल दोनों ही कोटेशन मार्क्स का यूज कर सकते हैं। Very often when we are reporting what somebody said, we do not give their exact words with quotation marks. कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम कभी कभी उन एग्जैक्ट वर्ड्स को आगे नहीं पहुंचाते हैं जो कि किसी ने बोले हैं, हम उनमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर देते हैं, राइट? इंस्टेड वी यूज अ सेइंग और टेलिंग वर्ब फॉलोड बाय दैट, और हम उस पूरी बात को एक वर्ब से शो करते हैं, दैट इज दैट, राइट? Reporting a speaker's word in this way is called reported speech or indirect speech. तो एक स्पीकर के वर्ड्स को इस तरीके से रिपोर्ट करना कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, दे से फादर सेड I need a clean shirt. This is in the direct speech. Father said that he needed a clean shirt. This is in the indirect speech. I have not brushed my teeth, said Ravi. Direct speech. Ravi said that he had not brushed his teeth. This is in the indirect speech. John said, I can't find my watch. This is the direct speech. John said that he could not find his watch. This is in the indirect speech, right? So, observe in the above sentences that in indirect speech we use. तो जल्दी से अब हम ऊपर सेंटेंसेस में जो डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। उनमें हमने क्या क्या यूज किया है? इन्वर्टेड कॉमास टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया है जब हमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट करना था। A comma is put as a short pause before the direct speech. कि कॉमा लगाया जाता है एक शॉर्ट पॉज के लिए डायरेक्ट स्पीच से पहले, राइट? द फर्स्ट वर्ड इन द इन्वर्टेड कॉमास बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कि जो फर्स्ट वर्ड है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो कैपिटल लेटर है, राइट? व्हाट वी डू इन indirect speech, sorry, what we do in direct speech is not done in indirect speech, right? कि जो भी हम direct speech में करते हैं वो rules हम indirect speech में follow नहीं कर सकते हैं। Such as the conjunction that is normally used in indirect speech. जैसे कि जो conjunction है that वो हम usually indirect speech में ही use करते हैं। Certain changes have to be made in the tenses when changing from direct to indirect speech. कि कुछ changes हैं जो हमें करने पड़ते हैं tenses में जब हम change करते हैं उन्हें direct से indirect speech में। So here are some examples. तो यहाँ पर कुछ examples हमें दिए गए हैं। जैसे the verb tenses that change are printed in color, and the pronouns and determiners that change in
that change are printed in italics. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं जिसमें जो वर्क टेंसेस हैं जिन्हें चेंज किया गया है उन्हें हमने कलर्ड में प्रिंट किया है, और जो प्रोनाउंस और डिटर्मिनर्स चेंज हुए हैं उन्हें हमने इटैलिक्स में प्रिंट किया है, राइट? रिमेंबर दैट द पास्ट टेंस ऑफ कैन इज गुड एंड द पास्ट टेंस ऑफ विल इज वुड. तो हमें ये याद रखना है कि कैन वर्ड का पास्ट टेंस है कुड और विल वर्ड का पास्ट टेंस है वुड, राइट? सो here it is the direct speech and the indirect speech, right? So we say Priya said, I feel sick. Priya said that she felt sick. Raj said, it is time to leave. Raj said that it was time to leave. I cannot find my book, said John. John said that he could not find his book. Ravi is teasing me, said Amit. Amit said that Ravi was teasing him. My bike will not start, said Sam. Sam said that his bike would not start. Pawan said, I have not had my breakfast yet. Pawan said that he had not had his breakfast yet. So, in the above sentences, we notice that the pronouns change when direct speech is changed into indirect speech. तो ऊपर जितने भी सेंटेंसेस थे उन सभी में हमने देखा कि जो प्रोनाउंस है वो चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, राइट? Pronouns of first and second person in direct speech are changed into the third person in indirect speech. कि जो pronouns है फर्स्ट और सेकंड पर्सन में डायरेक्ट स्पीच में वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में. The third person pronouns in direct speech do not change in the indirect speech. अगर already थर्ड पर्सन प्रोनाउन डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आगे फॉलो किया जाएगा, राइट? जस्ट लाइक I is changed into he or she. We is changed into they. You is changed into he, she, they. My is changed into his or her. Our is changed into their. Your is changed into his, her, or their. Me is changed into him or her. Right? Next we have change of tenses. तो अब जल्दी से tenses को change करते हैं, right? After a saying or reporting verb in the past tense, for example, said, we have to change the verb in the direct speech. कि अगर हम एक reporting verb को past tense में देख रहे हैं, राइट? द रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो ऑलरेडी अपने पास्ट टेंस में है, राइट? जैसे कि एग्जांपल, वी हैव टू चेंज द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच. अगर हमें इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, राइट? सो सिंपल प्रेजेंट इन द सिंपल पास्ट इन द पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस into the past continuous, present perfect in the past perfect, right? So ये तो बताया गया हमें tenses के बारे में. Now let's read the examples also, right? So the examples are, John said, I know her. John said that he knew her.
You scared us, John said. Okay, sorry. You scared us, John, said Ravi. Ravi told John that he had scared them. You are looking better, Sam, said Priya. Priya told Sam that he was looking better. She said, I have lost my pen. She said that she had lost her pen. Right? Next, if the reporting verb is in the present or future tense, अगर reporting verb अपने present या future tense में है, the tense of the reported speech does not change. The reported speech का जो tense है वो change होता ही नहीं है. Just like the teacher says, Anita is absent today. So in the indirect speech, it will remain the same. The teacher says that Anita is absent today. Right? Hema will say, Priyanka is a good girl. This is in the direct speech. And in the indirect speech, it becomes, Hema will say that Priyanka is a good girl. Next, we have change of words. So, अब बात की जाए अगर words के बीच में जो change आता है उसकी. So, words expressing nearness in time and place are changed into words expressing distance. तो ऐसे words जो express करते हैं nearness time में और place में, right? वो change हो जाते हैं words में जो कि distance express करें in the indirect speech. So it is word and changed into. So now changed into then, this changed into that, these change into those, here change into there, ago changed into before, thus becomes so, today becomes that day, tomorrow becomes the next day, the following day, yesterday becomes the day before, the previous day, last night becomes the night before, next week or per year, the following week or year, last week or year, the previous week or year, right? Next, we have conversion of statements into indirect speech. तो अब statements को कैसे converse किया जाता है indirect speech में, right? So it is to convert statements from direct into indirect speech, we follow these rules. तो जब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है तो हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू टोल्ड if it is if it is followed by an object. If there is no object, it is left unchanged. तो एक रिपोर्टिंग वर्ब जो कि चेंज की जाती है टोल्ड में, राइट? अगर उसे फॉलो किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के साथ, पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो अनचेंज रहती है, वो वैसी ही रहती है, इट डजंट चेंज, राइट? इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन. कि बहुत से सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पर दैट एक कंजंक्शन की तरह यूज किया जाता है. टेंसेस, pronouns and words denoting nearness are changed accordingly. कि जो tenses हैं, pronouns हैं, words हैं जो कि हमें nearness दिखा रहे होते हैं, वो change किए जाते हैं इस तरीके से. Let's see. Roger said, I am a player. Roger said that he was a player. Right? Roger said to me, I am a strong boy. Roger told me that he was a strong boy. Correct? Next. Now we have conversion of questions into indirect speech.
तो अब हम क्वेश्चंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे? सो इट इज, if the reported speech contains a question sentence beginning with a question word such as when, why, where, etc., we use no conjunction, and the indirect is introduced by verbs like asked, inquired, demanded, questioned, or a word with a similar meaning, right? कि अगर एक रिपोर्टेड स्पीच है जिसमें एक क्वेश्चन सेंटेंस है जो कि शुरू हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, जैसे कि व्हेन, व्हाई, वेयर, एटसेट्रा, हम उसमें कंजंक्शन को यूज नहीं करते हैं, और जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो सीधा वर्ब से शुरू की जाती है, जैसे कि आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, क्वेश्चन, राइट? या फिर एक ऐसा वर्ड जिसका एक सिमिलर मीनिंग होता है, करेक्ट? सो asking a question, reporting a question, correct? So this, where are they going? I asked where they were going. Priya said, where is my bag? In the reporting stage, it will become, Priya asked where her bag was, right? Moving up to the next one. If the reported speech in a question sentence beginning with a helping verb is, am, are, will, shall, etc. अगर एक रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चन है वो इन सभी वर्ड से शुरू हो रहा है, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, दैट इज, am, are, will, or shall, etc. The conjunction if or whether is used and the reporting verb said is changed into ask. तो हम कंजंक्शन if या whether का यूज करते हैं instead of that, right? और रिपोर्टिंग वर्ब said चेंज कर दिया जाता है asked में. Clear? The question sentence becomes a statement. अब जो question sentence है वो एक statement बन जाता है. So it is, John said, are you a student? जो कि एक direct speech है, right? John asked if I was a student. This is in the indirect speech. Next, he asked, are you the programmer, Miss Ruby? This is in the direct speech. And in the indirect speech, it becomes, he asked Miss Ruby whether she was the programmer. So here we have a box to remember. Let's see what is stated inside. We put the subject before the verb or helping verb to report a question. कि हम एक सब्जेक्ट यूज करते हैं वर्ब से पहले या फिर एक हेल्पिंग वर्ब जब हमें क्वेश्चन को रिपोर्ट करना हो, यानी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो. बट व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. पर जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, राइट? Now we have conversion of commands and requests into indirect speech, right? तो अब commands और requests को कैसे convert किया जाता है indirect speech में? So it is, we use the construction to plus verb or not to plus verb to convert a command or request into indirect. कि हम construction to plus verb या फिर verb या फिर not to plus verb को convert करते हैं command में या फिर request में एक indirect speech में. The reporting verb is changed into order, advise, request, purpose, etc. जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज की जाती है ऑर्डर में, एडवाइस में, रिक्वेस्ट में, पर्पस में, राइट? और बहुत सी चीजों में. सो हियर वी हैव द एग्जांपल्स in the both direct and the indirect speech. Let's read them and get a better idea. So, the general said to his troops, halt.
The general commanded his troops to halt. Amar said to his servant, "Go away." Amar ordered his servant to go away. She said to us, do not make a noise." She asked us not to make a noise. The notice says, "Do not enter." And in the indirect speech, it becomes the notice forbids us to enter. Next, we have conversion of exclamations and wishes into indirect speech. तो अब हम exclamations और wishes को कैसे indirect speech में convert करेंगे? Let's find out. So it is direct exclamatory sentences always end in an exclamation mark. कि जो direct exclamatory sentences होते हैं वो हमेशा exclamation mark के साथ ही end किए जाते हैं. When changing to indirect sentence, the exclamation mark is changed to a full stop. जब भी हमें change करें indirect sentence को when changing to indirect sentence, जब भी हम उसे indirect sentence में change करते हैं तो exclamation mark जो है वो एक full stop में change कर दिया जाता है. While reporting exclamations and wishes, the indirect speech is introduced by a verb expressing similar emotions as of the direct sentence. कि जब हम रिपोर्ट करते हैं एक्सक्लेमेशंस को, विशेस को, तो जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है एक वर्ब के साथ जो एक्सप्रेस करती है सिमिलर इमोशंस एज ऑफ इन द डायरेक्ट स्पीच, राइट? सम ऑफ द वर्ड्स which replace the interjection of direct speech sentences are. कुछ वर्ड्स जो इन इंटरजेक्शंस को रिप्लेस कर सकते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं वो हैं exclaimed with joy, sorrow, regret, applause, surprise, contempt, etc. Right? The lady said, "What a beautiful sunset." This is in the direct speech. The lady exclaimed with joy that the sunset was beautiful. This is in the indirect speech, right? Next, the pupil said, "Good morning, madam." This is in the direct speech. The pupils respectfully wished their teacher good morning. This is in the indirect speech, right? So, that was all about the chapter. I hope you all found it very easy and you all are clear with the rules and regulations that how we can change the direct speech into the indirect speech, right? So, that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.